Assalamu alaikum students. In this video, we will discuss all 12 tenses. What is tense? Simply we can define that the tense is a time. Tense क्या है basically time है, वक्त है. Tense tells us about time duration of any action that when an action happen. Tense हमें किसी भी action, किसी भी काम का टाइम बताता है कि कोई भी काम कब हुआ. Let's suppose कोई भी काम माजी में हुआ, हाल में हो रहा है या फिर आने वाले कल में होगा. जो टाइम ड्यूरेशन जो हमें बताता है वो कहलाता है टेंस यानी कि ज़माना. देयर आर 3 सब कैटेगरीज ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. यानी हाल, माजी, मुस्तकबिल. वो काम जो हमारे आज में हो रहे हैं वो कहलाते हैं प्रेजेंट, और वो काम जो हमारे गुजरे हुए कल में हो चुके पास्ट, और वो काम जो हमारे आने वाले कल में होंगे मुस्तकबिल. We further divide each tense into 4 sub-categories: simple or indefinite tense, continuous or progressive tense, perfect and perfect continuous tense. It means there are 12 tenses: present simple, past simple and future simple. Present continuous, past continuous, future continuous. Present perfect, past perfect, future perfect, and present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. We make present simple tense by the subject plus first form verb plus object. For example, I do. For past simple, we use second form of verb. For example, I did. We make future simple tense by the subject plus will plus first form of verb plus object. Example, I will do. We make present continuous tense by the subject plus is, am or are. The helping verb of present continuous tense are is, am, are, plus first form of verb plus ing plus object. For example, I am doing. For the past continuous, subject plus was or were plus first form of verb plus ing plus object. For example, I was doing. For the future continuous tense, subject plus will be plus first form of verb plus ing plus object. For example, I will be doing. For the present perfect, we use subject plus has or have plus third form of verb plus object. For example, I have done. For the past perfect tense, subject plus had plus third form of verb plus object. For example, I had done. For the future perfect tense, subject plus will have plus third form of verb plus object. For example, I will have done. We make present perfect continuous tense by the subject plus has been or have been plus first form of verb plus ing plus object plus since or for plus time. For example, I have been doing since morning. We make past perfect continuous tense by the subject plus had been plus first form of verb plus ing plus object plus since or for plus time. For example, I had been doing since morning. For the future perfect continuous tense, subject plus will have been plus first form of verb plus ing plus object plus since or for plus time. For example, I will have been doing since morning. First, we will discuss all 3 simple tenses, means present simple, past simple and future simple tense. We use present simple tense for the general facts, regular activities, habitual actions and इंटरेस्ट. मतलब रोज़मर्रा के जो काम है वो काम जो हम आदतन करते हैं या अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं. हमने अभी डिस्कस किया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम किस तरह बनाते हैं: सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और नेगेटिव बनाते हुए हम यूज़ करते हैं डू और डज प्लस not. And for the interrogative, we put the helping verb at the beginning of the sentence. For example, I eat chocolate. I don't eat chocolate. Do I eat chocolate? और present simple tense के आखिर में ताहे, तीहे, तेहे या फिर ताहूँ आता है. जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, अली खाना पकाता है. तो वो तमाम सेंटेंसेस जिनके आखिर में ताहे, तीहे, तेहे या फिर ताहूँ आए, वो तमाम सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल होते हैं. पास्ट सिंपल, वी यूज़ पास्ट सिंपल टेंस फॉर एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट. उन कामों के लिए वो एक्शन जो कि हमारे माजी में मुकम्मल हो चुके. एंड फॉर द पास्ट सिंपल टेंस वी यूज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड फॉर नेगेटिव वी पुट डिड.
subject plus did plus not plus first form of verb plus object. And for the interrogative, we put the helping verb at the beginning of the sentence. पास्ट सिंपल का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हुए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एट चॉकलेट. आई डिडंट ईट चॉकलेट. डिड आई ईट चॉकलेट. पास्ट सिंपल टेंस के आखिर में था, थी, थे या फिर अलिफ छोटी है या बड़ी आता है. We use future simple tense for action which is to be completed in time to come. Future simple tense हम उन कामों के लिए यूज़ करते हैं जो काम हमारे आने वाले कल में मुस्तकबिल में होंगे. We make future simple tense by the subject plus will plus first form of verb plus object. And for the negative we put not. And for the interrogative we put the helping verb at the beginning of the sentence. For example, I will eat chocolate. I want to eat chocolate. Will I eat chocolate? और फ्यूचर सिंपल टेंस के आखिर में गा, गी या फिर गे आता है. वो लाहौर जाएगा. बच्चे बाहर खेलने जाएंगे. अम्मी खाना पकाएगी. वो तमाम जुमले जिनके आखिर में गा, गी या गे आए वो तमाम सेंटेंसेस फ्यूचर सिंपल होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस ऑल कंटिन्यूस टेंस. Present continuous. We use present continuous tense for action going on at the time of speaking. वो काम जो बात करते वक्त जारी हो. Let's suppose अगर अभी हम बात कर रहे हैं और हमारे बात करते वक्त जो काम जारी है वो काम क्या है? Present continuous tense. Present continuous tense के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ आता है. बच्चे खेल रहे हैं, उस्ताद साहब पढ़ा रहे हैं, अब्बू काम कर रहे हैं. तो वो तमाम जुमले जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे या फिर रहा हुआ है वो तमाम जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूस होते हैं. पास्ट कंटिन्यूस. वी यूज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर एक्शन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट. वो एक्शन, वो काम जो माजी में कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए जारी थे. वी ऑफन यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर द अनफिनिश्ड और ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट प्लस फिनिश एक्शन. वो काम जो कि अनफिनिश्ड है मतलब जारी है और प्लस फिनिश्ड एक्शन. पास्ट कंटिन्यूस टेंस के आखिर में रहा था, रही थी या फिर रहे थे आता है. बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे. भंगी झाड़ू लगा रहा था. तो ये तमाम सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूस है. We make future continuous tense for action happening over a period of time in future. वो काम जो आने वाले कल में मुस्तकबिल में कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए जारी रहेंगे उन कामों के लिए हम future continuous tense यूज़ करते हैं. The future continuous tense shows certainty. We use the future continuous tense for actions we know will happen. Future continuous tense actions की श्योरिटी दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि ये काम फ्यूचर में होंगे. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे आता है. वो पार्क में खेल रहा होगा. सना अपना काम कर रही होगी. तो ये तमाम सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. स्ट्रक्चर ऑफ कंटिन्यूस टेंस. तमाम कंटिन्यूस टेंस चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, तीनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट for the affirmative. And for negative we put not. And for the interrogative we put the helping verb at the beginning of the sentence. तो फिर तीनों में डिफरेंस क्या है? हम तीनों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तीनों टेंसेस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है. For present we use is, am और are. For past continuous we use was or were. And for future continuous we use will be. For he, she, it or any singular name we use is. For I, we use am. And for you, we, they or any plural noun we use are. Same as it is in the past. For he, she, it or any singular noun we use was. And for you, we, they or any plural noun we use were. For example, I am eating chocolate. I was eating chocolate. I will be eating chocolate. Now we will discuss all perfect tenses. We use present perfect tense for life experiences, अपने तजुर्बात शो करने के लिए. Number 2, an action or situation that started in the past and continues in the present. वो एक्शन, वो काम जो शुरू तो माजी में हुए लेकिन हमारे हाल में प्रेजेंट में भी जारी है. Number 3, for action that happened in the past, often recent past, but has an effect in present. वो काम जो हुए तो माजी में हैं और ख़ास तौर पे हमारे recent past में लेकिन उसका असर हमारे present में मौजूद है.
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या फिर चुकी हूँ आता है। जैसे वो खाना खा चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। Past perfect tense. We use past perfect tense for action completed before some point in the past. It is used to make it clear that one event happened before another in the past. हम past perfect tense उन actions के लिए use करते हैं जो माजी में ही एक मखसूस point से पहले, एक मखसूस काम से पहले जो काम मुकम्मल हुए हैं। Past perfect tense के आखिर में चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे आते हैं। We use future perfect tense for action which is to be fully completed before a specific time in a future. उन actions के लिए, उन कामों के लिए जो मुस्तकबिल में आने वाले कल में मखसूस टाइम ड्यूरेशन से पहले, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन से पहले मुकम्मल हो चुके होंगे। इन जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे आता है। स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट टेंस। तमाम परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सेम है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। वी मेक परफेक्ट टेंस बाय द सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस object, and for the negative we put not, and for the interrogative we put the helping verb at the beginning of the sentence. Again हम इन्हें पहचानेंगे कैसे, इनके helping verbs की वजह से। For present we use has or have. For he, she, it or any singular noun we use has. For I, we, you, they or any plural noun we use have. For the past perfect tense we use had, and for the future perfect tense we use will have. For example, I have eaten chocolate. I had eaten chocolate. I will have eaten chocolate. Now we will discuss the perfect continuous tense. We use present perfect continuous tense for action which begins in past and is still continuing in present. वो एक्शन, वो काम जो शुरू तो हमारे माजी में हुए लेकिन हमारे प्रेजेंट में भी वो काम जारी है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ आता है। We use past perfect continuous tense for action that began in the past and continued up to a definite time. वो काम जो माजी में शुरू हुए और माजी में ही कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए जारी रहे। पास्ट परफेक्ट टेंस के आखिर में रहा था, रही थी या फिर रहे थे आता है। We make future perfect continuous tense for action that begins sometime in the past, present or in the future and is expected to continue in the future. वो एक्शन जो शुरू तो या तो माजी में हुए या हाल में या फिर फ्यूचर में शुरू होंगे और फ्यूचर में कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए जारी रहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे आता है। We make perfect continuous tense by the subject plus helping verb plus first form of verb plus ing plus object plus since or for plus time for the affirmative, and for negative we put not, and for the interrogative we put the helping verb at the beginning of the sentence. तमाम perfect continuous tense का structure same है, चाहे वो present perfect continuous हो, past perfect continuous हो या फिर future perfect continuous tense हो। Again हम इन्हें पहचानेंगे किसकी मदद से, इनके helping verb की मदद से। For present we use has been or have been. For he, she, it or any singular noun we use has been. For I, we, you, they or any plural noun we use have been. For past perfect continuous tense we use had been, and for future perfect continuous tense we use will have been. For example, I have been eating chocolate for an hour. I had been eating chocolate for an hour. I will have been eating chocolate for an hour. Let's revise all tenses. I eat chocolate. I ate chocolate. I will eat chocolate. I am eating chocolate. I was eating chocolate. I will be eating chocolate. I have eaten chocolate. I had eaten chocolate. I will have eaten chocolate. I have been eating chocolate for an hour. I had been eating chocolate for an hour. I will have been eating chocolate for an hour.